Hello students, we will take up another figure of speech, hyperbole. हिंदी में इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, यानी एक्सैग्रेट करते हैं उसको, जितना उसका गुण है, जितनी उसकी क्वालिटी है, हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके एक्सप्रेस कर देते हैं। उस अवस्था में वह अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। In hyperbole, a statement is made emphatic by exaggerating, by expressing it in a very large manner and overstatement. Just as we can see an example here, it is, she wept ocean of tears. The part of the sentence, ocean of tears, आंसुओं का समुद्र, it shows overstatement. The quality has been exaggerated, so it becomes a hyperbole. There is another example. Belinda smiled and all world became gay. कि बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार प्रसन्न हो गया. It is an exaggerated expression. Rivers of blood flowed in the battle. Rivers of blood, खून की नदियां बह गईं युद्ध में. It is another example of अतिशयोक्ति अलंकार, means hyperbole. In another example, we have a line from William Wordsworth's poem, Thousands I saw at a glance. विलियम वर्ड्सवर्थ का फेमस पोइम है डैफोडिल्स. उस पोइम की एक ये पंक्ति है. दिस लाइन shows the use of hyperbole in the poem. I beg 1,000 pardons is another example. Beg 1,000 pardons, हजारों माफियां मांगता हूं. You see, as many farewell as there are stars in the heaven. In this sentence, we have the use of hyperbole. Here you see there are some other examples given which belong to the use of hyperbole figure of speech.